half subtractor will works on how many input? Can anyone tell me? 2. Two Yes, it inputs. works on two input, right? Two inputs, A and B. Now in this case, we will have a two output. One is difference, difference, and borrow, right? So write down possible combination of two input. We'll have total four combination. 0, 1. Now, what is the difference of 0 minus 0? Difference is 0. We haven't considered borrow. So, borrow is also 0. 0 minus 1. 0 minus 1. It is not possible to subtract 1 from 0. So, we need to take borrow. Okay. And here you will have a 2. That is 2 minus 1 is 1. So, difference is 1 and borrow is 1 in this case. 1 minus 0. Difference is 1 and no borrow. 1 minus 1, 0 and no borrow. Right? So now let's implement circuit. Let's write equation for both the output, difference and borrow. So what is the equation for borrow? What is the equation for difference? Sir. Yes, yes. સર આ 0 1 ઇનપુટ માટે હજી એકવાર સમજાવો ને ડિફરન્સ એન્ડ બોરો. Okay. So 0 minus 1. 0 minus 1. We know that this is binary number system. See, normally decimal number system में हम क्या करते थे कि आपको दिया है कि 21 minus 19 दिया है आपको in decimal number system. It is not possible to subtract 9 from 1. So what you need to do? You need to take borrow from this. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा and यहाँ पे 11 होगा. Okay, so 11 minus 9 it's a 2. Okay, हमने यहाँ से borrow लिया 10 का. So 10 plus 1, ये 1 तो था यही. तो 11 minus 9 so 2. 1 minus 1 0 हो गया. ये डेसिमल नंबर सिस्टम था इसलिए हमने 10 लिया. दिस इज बाइनरी नंबर सिस्टम. तो हमें एज्यूम करना है कि आगे से हमें बोरो लेना है. सो बोरो लिया हमने, यहाँ पे 10 का बोरो लिया, यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है इसलिए यहाँ पे 2 plus 0 दैट्स वाई 2. ओके, सो 2 minus 1 इज 1 और यहाँ से हमने बोरो लिया है. मान लो आगे कुछ नंबर था वहीं से हमने बोरो लिया. तो दैट्स वाई 2 minus 1 is 1 और हमने बोरो लिया इसलिए 1. Yes, we have taken borrow. Is it clear? आंसर क्या आया? यस सर. 1. 2 बाइनरी नंबर सिस्टम था इसलिए यहाँ पे 2 आएगा. 2 plus 0 टोटल मिला के क्या हुआ? 2. तो 2 minus 1 क्या आएगा आंसर? 1. So that's why 1 is there. Okay. So now let's write equation for difference. D is equal to. So we'll write equation for this all 1 in output. तो इस 1 के लिए करस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या होगी? A dash B. A dash B. दूसरे 1 के लिए इक्वेशन क्या होगी? A B dash. A B dash. A B dash. And we know that this is the equation of XOR gate. So simply, if you connect input A and B in XOR gate, you will get the difference. What is the equation for borrow? For borrow, equation is simple. A dash B. A dash B, right? A dash B. So we have got these two equations. They are already simplified, so no need to go for further simplification. You can draw the circuit from these equations. A and B inputs are there. If you connect it in XOR gate, we have a difference. If you take NOT gate of A, you have A dash here and take a B and connect it to the AND gate.
you will get borrow here. Let's verify the output, whether we are getting correct output or not. So 0 0. तो अगर आप यहाँ पे 0 0 लेते हो तो 0 0 का XOR क्या होगा? If both number are same, then XOR will give 0 in output. तो 0 आ गया, so difference is 0. Yes, 0 0. तो यहाँ से 1 हो गया A dash, लेकिन यहाँ पे 0 था इसलिए इसका आउटपुट भी 0 आएगा. लेट्स वेरीफाई दिस 0 1. अगर A 0 है, B 1 है, तो क्या होगा? 0 1, तो डिफरेंस में आउटपुट आएगा 1, क्योंकि XOR गेट दो नंबर डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 1 देगा. यहाँ पे A 0 था इसलिए A डैश 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, B तो 1 है ही इसलिए बोरो भी 1 आएगा. राइट? अब दोनों 1 1 चेक करते हैं. दोनों 1 1 है तो 1 1, दो बोथ नंबर आर सिमिलर, सो दैट्स व्हाई XOR गेट आउटपुट में देगा 0. यहाँ पे 1 आया इसलिए A डैश हो जाएगा 0 और B 1 है. एंड गेट का एक इनपुट 0 हो गया इसलिए आउटपुट में भी 0 मिलेगा. सो all outputs are verified here. So it says that this circuit is correspond to this truth table.